Welcome back to one more Happy Minds. Namaste, namaste, everybody. Namaste, Narendra, Santosh. Lovely. All lovely to see all of you. अच्छा लग रहा है आप सबको देख के वापस. This is Happy Minds number. क्या नंबर है? 1170 if I'm not wrong. Good to see all of you for the 1170th time. Hmm? Namaste, Navnath, Nitin, Akshay, Tej from Jaipur, Kusum, Sailesh, Rupesh. Wow, wow. Wonderful to see all of you this very morning. Sonali. Namaste, Sonali. Kanta, Rupesh. I'm so many names just slip by. Namaste, Sarji from Solapur. Ari Shabash. Oh, that's nice. Aj Vinayak Solapur pahunch gaya hai. All of you joined me for the first time. You can just type in first and आप लिख सकते हो कौन से शहर से हो. You can type in first, so मुझे मालूम पड़ेगा आप first time आए हो. Just want to give you a brief कि Happy Minds होता है क्या है. And all of you have joined me on YouTube. Welcome, namaste one more time to all the YouTube viewers of Happy Minds. So Happy Minds normally is a 1 hour intervention, 1 hour engagement हमारा होता है, and it has been happening पिछले 25-26 साल से. I don't, I've lost the count. 25, 26, 28 कितने साल हो गए मालूम नहीं, लेकिन it has been going on for a quite long time. And this is today's edition. आज का जो है, it's 1170th Happy Minds for us. So हम लोग normally चालू करते हैं with meditation, which happened, and I look forward to this time of investing some time, 5-7 minute, 8 minute आपके साथ, where together we can meditate. And imagine करो ऐसे कई सारे लोग जब एक साथ meditation करते हैं, the kind of energy we create, the kind of aura we create is so wonderful. Not only for ourselves, but हमारे घर में, हमारे आसपास जो भी है, उनके लिए हम एक aura create करने की possibility create करते हैं. And that's why it's just so beautiful when we start Happy Minds with meditation. So we start with meditation and then we move on with a round of success stories. So कुछ लोग मेरे साथ success story share करते हैं, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या अचीव हुआ है, क्या प्रोग्रेस हुई है, एंड दे शेयर विद मी. और उसमें से कुछ जो मैं शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज काफी सारी आती हैं, सो आई सेलेक्ट 2-3 एवरी वीक, एंड दैट्स व्हाट आई शेयर. एंड देन आफ्टर दैट देयर इज अ राउंड ऑफ शेयरिंग फ्रॉम माय साइड व्हिच आई डू. कुछ सब्जेक्ट है जिसमें मैं बात करता हूँ, जैसे आज का सब्जेक्ट इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट on understanding what are the ingredients which create success. तो कामयाबी जो है, सक्सेस जो है, उसके बेसिक फाउंडेशन या पिलर्स क्या है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, कैसे बनती है, कैसे हम अपनी लाइफ में भी जो कामयाबी हम चाहते हैं वहां तक हम कैसे पहुंचे. तो उसका आपको एक स्ट्रक्चर मैं आपको आज दूंगा. आई एम श्योर दैट स्ट्रक्चर विल काइंड ऑफ हेल्प यू गेट अ हैंडल ऑन a lot of things of your life. So ऐसे हर हफ्ते there is something which I share, and you all have been kind enough to accept my offering a week after a week, and also use that offering to make your life better. तो ऐसा ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा है. So those of you who have joined me for the first time, just to share with you कि Happy Minds होता क्या है. So uh, you can just write in if you're there for the first time. So you can write in the city also, from आप पुणे से हो, सोलापुर से हो, कोल्हापुर से हो, मुंबई से हो, जयपुर से हो, दिल्ली से हो, साउथ से हो, कहाँ से हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां से भी हो, you can just write in, chip in that मैं इस शहर से हूँ. चलिए जी, आई हैव क्वाइट अ फ्यू सक्सेस स्टोरीज टू शेयर. उसमें से कुछ 2-3 सक्सेस स्टोरीज मैंने निकाली हैं, एंड कुछ शेयरिंग्स निकाली हैं जो मुझे लगी कि आई शुड शेयर विद यू. तो एक शेयरिंग है फ्रॉम संध्या केसकर फ्रॉम नासिक. एंड संध्या जी लिखती हैं, शी सेज, नमस्ते सर, वांट टू थैंक यू फॉर मेकिंग मी बिल्ड अ वेरी गुड हैबिट. And she says, now I always ask myself when I look in the mirror, how am I feeling? And how am I looking to automatically पूछती ही हूँ. Earlier I used to walk out from home in any emotional state, और वो अक्सर पॉजिटिव नहीं होता था. लेकिन आजकल बहुत कॉन्शियस रहती हूँ, एंड आई आस्क व्हाट इमोशन आई शुड बी हैविंग व्हेन आई लीव होम. और हर बार तो नहीं होता, लेकिन पहले तो कभी नहीं होता था. सो थैंक यू फॉर बिल्डिंग इन मी दिस ग्रेट हैबिट. अरे वाह, आई लव यू फॉर शेयरिंग दिस, संध्या. दिस इज सो वंडरफुल.
और मैं हर हैप्पी माइंड्स में नॉर्मली मोर और लेस हर हैप्पी माइंड्स में मैं ये आपसे कहता ही हूँ कि बिफोर यू वॉक आउट ऑफ योर होम, होम छोड़ो, बिफोर यू गेट आउट ऑफ योर बेड, बिफोर यू वॉक आउट ऑफ योर रूम, आपने खुद से पूछना चाहिए, हाउ एम आई फीलिंग। जब हम शीशे में देखते हैं खुद को तो हम पूछते ही है ना, हाउ एम आई लुकिंग, बिकॉज क्यों देख रहे हैं शीशे में? तो हम अपने आप को ठीक करते हैं, चेहरे को देखते हैं, बालों को देखते हैं, and all the fairer side, you all have, आपके पास ऑप्शंस हैं, लिपस्टिक है, पाउडर है, whatever you put on because you want to look good। और हम बार बार पूछते रहते हैं, तैयार होते होते हम पूछते रहते हैं, जब हम कपड़े पहन रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं, तो पूछते रहते हैं, हाउ एम आई लुकिंग, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे पहनते हैं, इसको ऐसा करते हैं, ये कलर अच्छा नहीं है। So we keep on asking how we are looking. I'm just saying, add one more question which is much more intense, much more powerful. And that question is, how am I feeling? So never walk out of your room feeling low. Never walk out of your home feeling low. Never walk out of your office for a sales call, for a meeting feeling low. Never walk into a meeting feeling low. तो ये बड़ा जरूरी है। आप अगर अच्छे नहीं लग रहे हो तो आप एक आध बार बच सकते हो ऑन ऑन यू नो कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हो और आप अच्छे नहीं लग रहे हो, तो फिर आप यू विल नॉट कॉज सो मच ऑफ अ लॉस देयर। लेकिन आप एक मीटिंग में जा रहे हो एंड यू नॉट फीलिंग गुड, तो फिर आप वो मीटिंग का सत्यानाश करके ही आओगे, ये बात तो पक्की है। तो ये इतना जरूरी है क्वेश्चन, मोर देन हाउ यू लुकिंग फ्रॉम द आउटसाइड, हाउ आर यू फ्रॉम द इनसाइड। आई विश बचपन से हमें ये बात को ड्रिल कर करके हमें बताया गया होता कि मोर देन यू फोकसिंग ऑन योर लुक्स, कैन यू फोकस ऑन हाउ यू फील। बिकॉज ऑल सेड एंड डन, मेरी इस बात से आप लोग एग्री करोगे कि आपके साथ जो लोग रह रहे हैं ना, चाहे वो काम कर रहे हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जो भी आपके साथ लोग हैं, या आपको कहीं अगर कुछ समय के लिए भी मिलते हैं, किसी पार्टी में कुछ लोग मिलते हैं, तो आप ये देखोगे कि दे मे फॉरगेट what you wore, they may forget how you spoke, they may forget how you smelled at that moment, वो सब भूल सकते हैं वो, but they will hold on to how they felt when they were with you, कि उनको कैसा महसूस हुआ जब वो आपके साथ थे। उनको वो लंबे समय तक याद रहेगा। और हमें भी याद है ना कि हम जब किसी के साथ रहते थे या किसी के साथ हमने कुछ समय बिताया, तो उस समय में हमें कैसा महसूस हुआ, एंड दैट्स व्हाट पीपल कैरी ऑफ अस। सो हाउ वी लुक इज सेकेंडरी, राइट, बट हाउ वी फील इज सो वेरी प्राइमरी, इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका बड़ा ध्यान रखिए। एंड विद दिस very very sharing of mind, one more time I'll ask you this very morning, I'll ask all of you, हाँ भाई, this very morning how are you all feeling? कैसे आप लोग फील कर रहे हो? चलो, let me see your answers. How are you feeling this very morning? Hmm. How are you just feeling? Chakas, enthusiastic. Oh, gratitude. Oh, thank you, Tej. Takatak. Type karo फटाफट. How are you feeling this very morning? Awakened. Oh my God. Hmm. Awakened from sleep, awakened in life. I'm good. No, good is not good enough. Deepali, good is not good enough. Fantastic. Must, charm, energetic, excited and great. Hmm. जबरदस्त, वंडरफुल, वंडरफुल गोवा मॉर्निंग। अच्छा, ये बताना भी जरूरी है कि तुम गोवा में हो, ठीक है? फीलिंग होम। अच्छा, हाँ, यू आर इन होम, यू आर एट होम। प्रीतम सेज ग्रेट, ऑसम, एक्साइटेड। माय गॉड, बहुत सारी है ये तो क्वालिटीज। मस्त, होपफुल मॉर्निंग। अच्छा जी, ग्रेट, काम। चलो, बढ़िया बढ़िया, गुड, लवली टू सी ऑल ऑफ यू विद योर स्टेट्स विच यू आर इन। होल्ड ऑन टू दी स्टेट्स इफ दे आर पॉजिटिव, एंड इफ दे आर नॉट सो पॉजिटिव, उसको पॉजिटिव करने के लिए कुछ करना चाहिए, और कुछ करते हैं। और मुझे लगता है, विश्वास है मुझे ऐसा, कि हैप्पी माइंड्स के बाद आई एम श्योर यू विल बी दोज हु आर नॉट ऑन दैट स्टेट ऑफ बीइंग वेरी पॉजिटिव, हैप्पी माइंड्स के बाद आप आ जाओगे। ठीक है, चलिए। Another lovely sharing which is there. It's from Hemant Patnankar. And he says, MG sir, my team in Diwali gave me a surprise gift.
And that gift was a song written by them, dedicated to me. Never in my life I got a gift like this from them. And then they came and said, "Sir, you have changed the last 6 months." मतलब वो उन्होंने हेमंत के लिए लिखा, उनकी टीम ने कहा आप लास्ट 6 मंथ्स में बदल चुके हो. एंड हेमंत सेज, "आई एम मोर रिलैक्स्ड and approachable at work than before." When I heard this, I realized that actually I don't get angry like earlier days. I don't scream and shout. I just want to say to you, sir, that business is still very challenging. But अब ऐसा लगता है कि मैं संभाल लूंगा. HM है ना मेरे साथ. अरे वाह, this is such a. When I read this, I had a smile on my face, and he says, business तो पहले जितना challenging अभी भी है, लेकिन अब लगता है कि मैं संभाल लूंगा. And HM है ना मेरे साथ. And I feel that this is so very beautiful that once in a while, वो ना हम अपने कंधों पे इतना लोड लेके चलते हैं, चाहे वो बिजनेस का हो, परिवार का हो, रिश्तों का हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हो. एंड इट्स ह्यूमन टू गेट टायर्ड, इट्स ह्यूमन टू गेट एग्जॉस्टेड, इट्स ह्यूमन टू गेट अपसेट, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, इट्स ह्यूमन टू फील लो एट टाइम्स. स्वाभाविक है, हो सकता है. तो मेरा आपसे ये कहना है कि वंस इन अ वाइल you kind of you got to let go once in a while. वो अपने कंधों से उस डोली को उठा के रख दो जिसको लेके तुम चले जा रहे हो. वो डोली तुम्हारे बिजनेस की है या रिश्तों की, आई डोंट नो. बट you're carrying that dolly on your shoulders for a long period of time. और थकान होती है. इसलिए जब भी आप कभी पहाड़ चढ़ते हो ना, and I'm a pahadi, so I come from hills, and I've been sharing this and telling this as many times as I can. Even if you in Pune, अगर आप जो है, if you go for Singhgarh trekking uphill जाते हो, तो वो जो आधे 1 घंटे का जो भी आपका अपहिल का ट्रैक होता है, it's important that after some time you take a break and you sit down. Not only for catching a breath, वो तो है कि थकान थोड़ी मिटती है, सांस नॉर्मल होती है. बट एट द सेम टाइम जब आप 10 मिनट की चढ़ाई करते हो एंड यू रीच अ सर्टेन हाइट, तो आप जब बैठते हो तो यू सी द वैली बिहाइंड, यू सी द हाइट विच यू हैव रीच टू. आप देखते हो कि आप क्या छोड़ के आए और आप कहाँ पहुंचे हो. तो मुझे लगता है कि ऐसे ही लाइफ में भी ना, वंस इन अ वाइल यू शुड सिट, वंस इन अ वाइल यू शुड जस्ट लेट गो. ऐसा रख देना चाहिए अपना बोझा साइड में और ऐसा बैठना चाहिए. एंड दैट सिटिंग, दैट लेटिंग गो काइंड ऑफ रिजुवेनेट्स यू. फिर आपको वापस बिल्ड करता है, वापस आपके अंदर एनर्जी लाता है टू पिक अप समथिंग मच मोर पावरफुल, समथिंग मच मोर ब्यूटीफुल. तो आप जब बैठते हो सिंहगढ़ के चढ़ाई के बाद, फिर आप देखते हो अच्छा अभी और जाना है, एंड देन देयर इज मोर एनर्जी फॉर यू टू वॉक अप अगेन. यू सिट अगेन, यू सी द वैली बिलो फ्रॉम अ मच मोर हायर प्लेस. और ऐसा करते 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 फिर आप पहुंच जाते हो अपनी मंजिल पे. लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हो, लगातार चलते रहते हो, द टायर्डनेस गेट्स टू यू, द फ्रस्ट्रेशन गेट्स टू यू. सो व्हाट हेमंत एक्नॉलेज वाज दैट पिछले कई महीनों में मुझे लगा कि मैं उतना चिल्लम चिल्ली नहीं कर रहा हूं, उतना मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूं, उतना मैं लोगों के साथ वो बिहेवियर नहीं कर रहा हूं जो नॉर्मली मैं करता था. एंड दैट पीपल सॉ एंड ऑब्जर्व, एंड दैट्स व्हाट पीपल गिव हिम एज अ गिफ्ट, दैट यू हैव चेंज्ड. And I feel that all of us, and that's how happy minds start every Saturday. We kind of let go, just let go. And business he says तो चल ही रहा है, जो challenges हैं वो चल ही रहे हैं, लेकिन मैं संभाल पाऊंगा. Isn't that such a wonderful feeling? मैं संभाल पाऊंगा. I think all of us can do with this feeling, can do with a bit more of this feeling कि मैं संभाल पाऊंगा. अगर ये फीलिंग हमारे अंदर तक ऐसे चलेगी कि मैं संभाल लूंगा, क्योंकि चैलेंजेस तो हमें मालूम नहीं कि कब आएंगे, कैसे आएंगे, किस प्रोपोर्शन में आएंगे, किस क्वांटम में आएंगे, हमें नहीं मालूम. लेकिन अगर ये अंदर से एक आवाज आती है, अच्छा मैं संभाल लूं, इजंट दैट सो वेरी रीअश्योरिंग. इमेजिन करो कि आप काम बिजनेस में हो और आपका कोई चैलेंज आता है आपके सामने, चाहे कस्टमर एंड से आए या वेंडर साइड से आए या गवर्नमेंट साइड से आए, और आपकी टीम में कोई इंसान है और आपको बोलता है मैं संभाल लूंगा सर. हाउ वुड यू फील? Suddenly all your worries, your stress will just come to a bare minimum. कि कोई तो है जो कह रहा है कि मैं संभाल लूंगा. I'm just saying, क्या आप अपने लिए वो बन सकते हो कि कोई भी सिचुएशन आए और आपके अंदर से आवाज निकले, अच्छा मैं संभाल लूंगा.
ना, दैट्स द बिगनिंग। और बाद में फिर वो संभालना कैसे होता है, किस लेवल का होगा, वो अलग बात है। बट ये शुरुआत अगर ऐसी हो जाए, तो आपकी काबिलियत उस चीज को हैंडल करने की 10 गुना बढ़ जाती है। Am I right or not? What we're missing in life are such people around us जो हमें बोले, सर मैं संभाल लूंगा ना। What we're missing is अंदर से एक आवाज आना कि मैं संभाल लूं। And Happy Minds has been just focusing on this the last so many years कि क्या हम हर हफ्ते एक वीकली शॉट ले लें, जिससे हम अंदर से इतने स्ट्रांग बन जाएं कि कोई भी सिचुएशन सामने आ जाए, दुनिया बोले ना बोले, कोई हो ना हो साथ अपने, लेकिन हम तो खुद को बोले मैं संभाल लूंगा। Am I able to connect with you on this? हम्म? हाँ जी। संभाल लोगोगे कि नहीं संभाल लोगे? तो ये एक आवाज अंदर की कि मैं संभाल लूंगा इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इस आवाज को, इस थॉट को, इस स्टेटमेंट को जितना हो सके बुलंद बना। टू थिंग्स, आप साथ हो तो दुनिया को दिखा देंगे। शाबाश। आई लव यू विनायक। आज बहुत मूड में है विनायक। चिंटू बन के। सॉरी, I got a bad cold, but it's taken care of. हम लोग बातें ऐसी कर लेते हो ना, पर चिंटू बन के संभाल लेंगे। मैं चिंटू जो मैं लास्ट सेशन में बात करी थी, याद है संतोष को। मैं संभाल लूंगा, क्या बात है। अरे हम मौत को जीने के अंदाज से, अरे बाबा कहाँ मन चले गए तुम मौत को, मौत में सुबह सुबह। इट इज बियॉन्ड नेवर गिव अप एटीट्यूड संतोष। इट इज बियॉन्ड दैट। व्हाट आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू इज, दो चीजें मैं आपसे कह रहा हूँ कि सिचुएशंस जो हमारे आसपास है वो हमारे हिसाब से नहीं होंगी। सिचुएशंस विल बी बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स द वर्ल्ड नोज अबाउट, बिकॉज हमारे हाथ में सिर्फ हमारी लाइफ है, नथिंग एल्स। इनफैक्ट आपके हाथ में तो आपके बच्चे की लाइफ भी नहीं है, आपके हाथ में आपके स्पाउस की लाइफ भी नहीं, सबकी लाइफ अपने अपने हाथ में है। एंड द मोर लाइव्स आर अराउंड अस, द मोर द कॉम्प्लेक्सिटी इज, उतना ही पेचीदापन बढ़ जाता है। तो जिंदगी तो वैसे भी जो हो रहा है हमारे साथ, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम जैसा रिस्पॉन्स दे सकते हैं वो तो हमारे कंट्रोल में। हमने एक बहुत बार सुना है। व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज, कैन वी काइंड ऑफ हैव दिस इन इंटरनल स्ट्रेंथ वेयर व्हेन थिंग्स हैपन टू अस, आवर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज मैं संभाल लूंगा। आवर फर्स्ट रिस्पॉन्स इज मैं संभाल लूंगा। अब वो संभाल लूंगा कि उसके बाद का सारा कार्यक्रम, दैट विल हैपन आफ्टर दैट, बट एटलीस्ट द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज मैं संभाल लूंगा, बिकॉज दैट फर्स्ट रिस्पॉन्स काइंड ऑफ पेव्स द वे फॉर द फ्यूचर रिस्पॉन्सेस टू कम। एक ये बात। दूसरा, हमें ऐसे लोग चाहिए अपने आसपास, चाहे वो घर में हो, चाहे वो टीम में हो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे समाज में हो, कुछ ऐसे लोग तो चाहिए जो आपके साथ खड़े हों और वो बोले मैं संभाल लूंगा ना। तो कुछ बातें हैं जो हमारे संभालने के बियॉन्ड होती है। हम कहते हैं मैं संभाल लूंगा, बट हमारी काबिलियत के बियॉन्ड होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग साथ में रह गए जो कहते हैं कि मैं संभाल लूंगा, और आप भी बोल रहे हो कि मैं संभाल लूंगा, तो फिर वो सिचुएशन को हम क्यों नहीं हैंडल कर पाएंगे अच्छे ढंग से। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कि आप अंदर से कह रहे हो मैं संभाल लूंगा, और फिर आपके आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं संभाल लूंगा। देन योर एबिलिटी, फिर आपकी जो पोटेंशियल है, आपकी जो क्षमता है टू हैंडल, टू टेक ऑन बिग टास्क, टू टेक ऑन बिग रिस्क, इट गोज एक्सपोनेंशियली हाई। प्रॉब्लम कब आता है? जब कोई छोटी सी सिचुएशन भी सामने आती है और अंदर से आवाज ही नहीं आती कि मैं संभाल लूंगा, अंदर से आवाज आती है कैसे होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। और फिर आप देखते हो आपके आसपास एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जो आपके कंधे के ऊपर हाथ रख के बोले डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। तो मालूम पड़ा वो एक एक भी आत्माएं नहीं है
सब आपके कंधे के ऊपर बैठे हुए हैं कि तुम मुझे संभाल लो। तो आपको संभालने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप संभाल रहे लोगों को, तो फिर ये दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो ऐसे लोगों को संभाल के रखो जो आपको संभाल के रख सकते हैं। ऐसे लोगों को संभाल के रखो जो आपकी कोई सिचुएशन को संभाल सकते हैं, और खुद को अंदर से इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप संभाल लो खुद को। ये क्या आप लोग क्या बातें कर रहे हो सर? वॉल्यूम ठीक नहीं आ रही है। अरे ठीक है, वॉइस वेरी लो। आई इज इट ओके ना? तुम लोग मुझे बीच बीच में ऐसा डाल देते हो वॉल्यूम कम है। हम्म, ठीक, आई थिंक इट वाज एट योर लेवल अश्विन। गेट इट चेक। चलिए जी, लेट्स मूव ऑन टू, अच्छा, I had a great experience yesterday. We had the very Atharva Sudhama yesterday coming over, and it was great meeting him. I met him, मैं कुछ दिनों पहले मैं मिला अथर्व को, and I met him yesterday. कल भी मेरी मुलाकात हुई। कल हमने एक छोटी सी रील बनाई। इज इट सर, रील बनाते हैं, एंड मैं कहा चलो, एंड ही इज, एंड लेट मी टेल यू, ही इज सो सिंपल, so very. I don't know how many of you from outside Maharashtra know Atharv Sudhame. In Maharashtra, I think everybody knows Atharv. He is so very popular, so very famous, and millions of subscribers on the social media for him. And कल जब मैं मिला तो इतना simple, इतना humble इंसान, and इतना creative and talented. तो इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन कि आप इतने टैलेंटेड हो, आप इतने क्रिएटिव हो, और उसके साथ साथ आप सिंपल हो और हम्बल। मतलब सर एक रील बनाते तो मैंने कहा यार रील कैसे बनेगी, ये इंसान तो रीलों का बादशाह है, एंड आई हैव नेवर बीन इन दैट स्पेस। तो मेरा स्पेस अलग है एंड अथर का स्पेस अलग है, बट वो एक ही, देयर वाज नो रीटेक, देयर वाज नथिंग व्हिच हैपेंड। वो एक ही बार में एक रील बन गई। एंड जब उन्होंने अथर ने मुझसे कहा कि सर ये ऐसा, ये जोक में हम लोग बोले, मैंने कहा अच्छा। एंड आई सेड ठीक है। पहले तो मुझे लगा यार ये जोक मैं कैसे बोलूं, देन आई सेड अथर्व है ना साथ में, तो सब कुछ संभव है, हो जाएगा। तो फिर अथर्व साथ में है तो फिर किस बात की चिंता। तो दैट्स हाउ इट हैपेंड, एंड वी मेड अ स्मॉल रील, एंड मैं हंसा बाद में। मैंने कहा हाँ, ये काम भी करना बाकी रह गया था शायद। तो ऐसा करते करते एक दिन जो मेरी एक और तमन्ना है लाइफ में, दैट आई विल एक्ट इन अ फिल्म, तो शायद वो भी कभी पूरी हो जाएगी। तुम में से कोई प्रोड्यूसर बन के आएगा, तुम में से कोई डायरेक्टर बन के आएगा, बोलेगा सर आओ पिक्चर में काम करते हैं, तो वो भी कर लेंगे। बट आई हैड अ ग्रेट टाइम yesterday. I don't know if you saw that reel on social media. I think it's on Insta. आप देखना, and those of you are following Atharv, uh, I'm sure आप लोगों ने देखा होगा. Those who are not following Atharv, follow Atharv. It's a wonderful sense of humor and awesome timing, and great content he comes out for his audience. So कल वो हुआ, and all this was possible because अक्षय मोरे, क्रिसल अक्षय मोरे आज पता नहीं हमारे बीच में कहाँ पर है कि नहीं, जिम में है कि नहीं अक्षय? अक्षय कुठे है तो? नहीं, आज जिम में शायद वो भी लंबी नींद निकाल रहा है। ही इज नॉट देयर। सो अक्षय, he is there in every happy minds, and today, yesterday Akshay said sir मैं लेके आ रहा हूँ अथर्व को, and Akshay was a person who got Atharv and organized things and things like that. So that's what happened yesterday. चलिए आज का सब्जेक्ट में थोड़ा सा और रोशनी डालते हैं। सो आई शेयर्ड विद यू कि कामयाबी जो है, सक्सेस जो है, उसके कुछ बेसिक फाउंडेशंस, बेसिक पिलर होते हैं। एंड ये सब्जेक्ट मेरा कहाँ से आया? I watched a video of a girl called शीतल देवी. चलो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको शीतल देवी के बारे में मालूम है? आई थिंक इट्स अ रीसेंट न्यूज, रीसेंट एक्टिविटी। चलो लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट शीतल देवी। देखता हूँ कितने लोगों को मालूम है अ, शीतल देवी के बारे में। चलो फटाफट टाइप करके, अब गूगल मत करना, अभी मुझे बताओ भी आप में से फटाफट बताओ, यू नो, यस और नो, यस और नो। सो वी हैव जितेंद्र हु सेड यस। नो वाले, नो वाले तुम लोग को ना चमाट पड़ेगा अभी, जितने भी नो वाले हैं। चलो, शीतल देवी, I'll share a bit about शीतल देवी. शीतल देवी, she hails from Jammu and Kashmir.
आई थिंक ऑल ऑफ 16 और 17 ईयर्स ऑफ एज, 16-17 साल की उनकी उम्र है, एंड जम्मू एंड कश्मीर से है। एंड हर फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ हाउ द इंटायर वर्ल्ड नोज हर, पूरी दुनिया उनको जानती है, कुछ लोगों को छोड़ के जो आज हैप्पी माइंड्स में बैठे हुए, उनके अलावा दुनिया जानती है शीतल देवी को। और ये 16 साल की उम्र में शी became a double gold medalist in archery in the Asian Para Games of 2023। तो आर्चरी में उनको डबल गोल्ड मेडल मिला, 2 गोल्ड्स। Now what is great about it? आर्चरी है, ठीक है, वो हो गया, गोल्ड मेडल मिलना अलग बात है, मिल गया, लेकिन पूरी दुनिया क्यों उनके गागा कर रही है? वो इसलिए कि ये पैरा ओलंपिक्स है। दिस इज फॉर द स्पेशल पीपल, जो उनके लिए ओलंपिक्स होते हैं। एंड शीतल देवी के बारे में ज्यादा दुनिया क्यों जान रही है? बिकॉज शी बाय बर्थ शी वॉज नॉट बोर्न विद हर आर्म्स, तो उनके हाथ नहीं। एंड इफ यू टू सी द वीडियो, इट इज सच एन इंस्पायरिंग वीडियो। कि वो कैसे अपने से वो बो को उठाती हैं, कैसे उस अपने पैरों से ही, तो अपने पैरों के अंगूठे से, उंगलियों से वो तीर कमान ले रही हैं। एंड शी इज लिफ्टिंग द बो एंड एरो, विच इज आई थिंक 18-20 केजीज ऑफ वेट। और वो 18-20 किलो के वजन के धनुष बाण को ऐसा लेके शी इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द टारगेट, एंड उसमें वो 2 गोल्ड मेडल लेके आई। इनफैक्ट वॉचिंग दैट वीडियो, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल, जिन लोगों ने वीडियो देखा, वो तुमने कहा यार हमारी क्या प्रॉब्लम है लाइफ में यार? किस बात को लेके हम अपने मूड खराब कर लेते हैं? किस बात को लेके हमें चिंता है? किस बात को लेके हम परेशान हैं? आवर प्रॉब्लम्स आर नथिंग, एंड देयर इज दिस गर्ल who, in spite of being born the way she was born, who, in spite of the way life has given us that the treatment to her, in spite of the way the situation is for her, uske baad bhi she goes up and she lifts the bow and arrow with her feet, and not only lifts the bow and arrow, she shoots that bow and arrow for a double gold medal. वो वीडियो को मैंने बहुत बार देखा, and every time I said, what human spirit ना, कि कोई, आप कहीं कभी लो फील कर रहे हो तो कोई ना कोई ऐसा इंसान आपके आसपास है दुनिया में कि जो अपने जिंदगी जीने के तरीके से आपको बता रहा है, अरे यार किस बात को लेके तू परेशान, व्हाट इज मिसिंग इन योर लाइफ, व्हाट इज नॉट हैपनिंग राइट इन योर लाइफ? एंड दैट्स द अवेकनिंग कॉल। एंड आई हैव सीन पीपल हु आर ब्लेस्ड विद सो मच, दे हैव एवरीथिंग, एंड स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, स्टिल दे आर नॉट, they don't have the look on their face which makes them feel कि यार ये ब्लेस्ड है, इस पे प्रभु की कृपा है इसके ऊपर। इसको देख के लग नहीं रहा कि इसके ऊपर कृपा है, इसको देख के लग नहीं रहा कि इसके ऊपर इसके माँ बाप का आशीर्वाद है, इसको देख के लग नहीं रहा कि इसके पास पास बहुत प्यार है। मुझे लगता है हम सब, ईच वन ऑफ अस, वी आर सो फार मोर ब्लेस्ड देन शीतल देवी। बट शीतल ने वो करके दिखाया, where the world has kind of woken up and the world has realized. So feeling proud of belonging to a country where she lives in, वो तो है ही एक फीलिंग, बट एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, कि ह्यूमैनिटी क्या क्या आपको दिखाती है इंस्पायर करने के लिए, क्या क्या लेवल तक ह्यूमैनिटी पहुंच सकती है। दैट एग्जांपल इज ऑफ शीतल देवी। तो आज तो आपने बोल दिया कि आई डोंट नो हु शीतल देवी इज, बट आज के बाद कोई पूछे हु शीतल देवी इज, यू नो व्हाट हु शीतल देवी इज। दे आर नॉट हैंडीकैप, अवनाथ, दे आर नॉट हैंडीकैप। हैंडीकैप तो हम हैं, सब कुछ होते हुए भी नहीं कर रहे हैं। दे आर द ब्लेस्ड वंस। इनफैक्ट हमें दिखाना चाहिए लोगों को कि क्या पॉसिबिलिटी है, और वो दिखाते हैं हमें कि क्या पॉसिबिलिटी है ना? आश्चर्य की बात। सो नेवर कॉल दीज पीपल हैंडीकैप, दे आर स्पेशल पीपल, ब्लेस्ड, दे गो बियॉन्ड, एंड दे काइंड ऑफ टेल द वर्ल्ड, दे टेल द वर्ल्ड। जब अथाह होती है ना, अबंडेंस होती है, तो शायद उसकी परवाह नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं होती। जब चीजें कम होती हैं तो शायद वैल्यू ज्यादा होती है। तो व्हेन वी हैव थिंग्स इन अबंडेंस, द वैल्यू गोज डाउन।
हाँ जी। तो जब मैंने उनका वो वीडियो देखा तो मुझे मुझे आया समझ में कि कामयाबी के पीछे का क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे। एंड आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन, और मैं उसको हल्का सा आपके लिए, यू मे हैव हर्ड दिस इन डिफरेंट वेज फ्रॉम मी इन द पास्ट और फ्रॉम अदर्स, बट उसको स्ट्रक्चर करते हैं आज। सो द फर्स्ट इंग्रेडिएंट व्हिच वी ऑल नीड टू बी सक्सेसफुल, द फर्स्ट इंग्रेडिएंट बेसिक है, मतलब ये आप बोलूंगा तो आप कनेक्ट करते करते जाओगे और फिर आपको समझेगा कि किसी भी एक्टिविटी में, इफ यू वांट टू बी if you want to have a breakthrough, किसी भी एक्टिविटी में, if you want to have some basic amount of success, तो ये आपको लगेंगे इंग्रेडिएंट्स। नंबर वन, यू विल नीड नॉलेज। ये जरूरी है कि आपके पास जानकारी, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, बट this is not the only ingredient to make you successful, and that's where many people get stuck. I remember way back in 2001 के आसपास की बात है। आई हमारे ऑफिस में देयर वाज एन ऑसम फैकल्टी, क्लिफर्ड से उनका नाम था। वेरी वेरी ऑसम फैकल्टी, मतलब उनसे आप बात करो, ही वाज टीचिंग इंग्लिश एट आवर प्लेस, एंड whenever I would sit across with him, he would have awesome things to share। मतलब इतना बढ़िया वो बात करते थे, इतना बढ़िया उनके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होता था बताने के लिए। आप कोई भी सब्जेक्ट के बारे में बात करिए, he would have something to add on। And first few days, first few weeks I was there, and I would just look at him, admire him, talk, and I would want to talk to him more। मेरे भी formative years थे, but I realized that in spite of all the knowledge which he had, which was so wonderful, he was a difficult man to work with, he was a difficult man to be around with। And soon the students started complaining that they were not enjoying his sessions, his classes। And then I came to know a little bit more about his personal life। वहां पर भी बड़े challenges थे। And then finally, sadly, after a few months, we had to say goodbye to him। And the more I think about it, the more I realize कि इतनी knowledge, इतनी जानकारी, इतनी uh, so this should have been the stepping stone for somebody to become successful, isn't it? तो आपके पास कितनी भी डिग्रियां हो जाए, आपके पास कितने भी सर्टिफिकेट्स हो जाए, that itself is not enough to make you successful। I'm not saying it is not required, I'm saying that itself is not enough। There has to be something beyond that। So किसी भी चीज में अगर कामयाबी चाहिए, ब्रेक थ्रू चाहिए, तो बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। And a second ingredient, which along with knowledge, if you have, then you have higher chance of success, right? And that second ingredient is talent। कोई तो टैलेंट, कोई तो कैपेबिलिटी, कोई तो काबिलियत तो आपके पास होनी चाहिए। And I've seen many talented people, many। There's one family friend of ours, and we meet her quite often। और जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, उनके घर जब भी मैं जाता हूँ, तो उनके कभी कभार उनके एक रिश्तेदार हैं जो मुझे मिलते हैं। एंड जब भी मैं उनसे घर जाता हूँ तो उनके रिलेटिव से मिलता हूँ, बात होती है, एंड ही नोज हु आई एम एंड आई नो उनके रिलेटिव है, तो बातचीत होती है। और उस बातचीत में मुझे ये मालूम पड़ता है कि दैट रिलेटिव इज सो वेरी टैलेंटेड, कि हाथ में कला है उनके। उनके एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, एंड थिंग्स डिडंट गो ऑन वेल, बट ही इज सो वेरी टैलेंटेड। उनको कुछ चीज बोलो बनाने को तो ही कैन गेट इट मेड आउट ऑफ हिज हैंड्स, but he's still struggling in his business। He's still not made it big in his life. And so many years I've known him. For the last 10, 15 years I've known him. But I've not seen him move ahead। I've not seen him do something which he could have done। इतना talent होने के बाद भी he could not make a life which was worth talking about। And I did share with him a few times कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। And then after a few times you realize that somebody is not open to listening, somebody is not open to change। इनफैक्ट चेंज तो मैं बोलूंगा कि चेंज तो ऑटोमेटिक है यार। प्रोग्रेस इज ऑप्शनल, इजंट इट? चेंज तो होना ही होना है, चाहे आपके फेवर में हो चाहे आपके फेवर में ना हो, लेकिन प्रोग्रेस इज अ चॉइस। तो उन्होंने प्रोग्रेस को चूज नहीं किया। टैलेंट इतना है,
And you will see that there's so many people around you who may be talented, who may have a lot of skill sets with them on different aspects of life. They have skill sets, but they're not able to have any breakthroughs in life. They're not able to create a life which we can term as successful. इसका मतलब क्या है कि talent on its own will not give you success. I was reading about अच्छा मुझे बताओ हमारा जो फर्स्ट रिपब्लिक डे था उसमें शहनाई किसने बजाई थी? चलो अब क्विज क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू. हमारा जो रिपब्लिक डे था उसमें शहनाई किसने बजाई? हम्म. अरे वाह वाह हेमंत, आपको फुल मार्क्स दिए जाते हैं हेमंत. वाह दीपिका ऑल्सो. वाह वाह वाह. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. हम्म, क्या बात. ग्रेट. एंड आई एम जस्ट सेइंग कि इमेजिन करिए कि किसी को आपने बुलाया ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ द कंट्री और आपने वहां पर शहनाई बजाई. कितना टैलेंट होगा, कितना टैलेंट होगा उस इंसान के. बट दैट पर्सन died in a one room apartment in a very poor condition. बिस्मिल्लाह खान साहब जब उनकी मृत्यु हुई, जब डेथ हुई उनकी, ही डाइड लाइक अ पॉपर. मतलब एक फकीर ही हो गए थे, इतनी उनकी बुरी हालत. तो इतने सब काबिलियत होने के बावजूद भी कुछ तो कमी रह गई. इतना टैलेंट होने के बावजूद भी कुछ तो कमी रह गई. तो टैलेंट itself will not take you, or itself will not make you have a breakthrough. तो knowledge itself will not make you have a breakthrough. Talent itself will not make you have a breakthrough. एंड मैं आपसे बात करूं तो आपके मन में ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे होंगे जो आपके आसपास होंगे, जो आपको लगता है यार ये तो बड़ा टैलेंटेड है. That person can be a talented cook, can be a talented gardener, can be a talented electrician, can be talented. किसी भी क्षेत्र में उसकी कलाकारी बड़ी बढ़िया है, बट वो उस टैलेंट के आगे नहीं बढ़ पा रहा. इसका मतलब कुछ और तो चाहिए ना कामयाब होने के लिए, कुछ और तो चाहिए ब्रेक थ्रू लाने के लिए. एंड थर्ड थिंग विच अब बहुत से लोगों ने कहा सर एटीट्यूड होना चाहिए. अग्रीड. And I absolutely buy that thought of yours. That third part is the attitude part. लेकिन ये attitude आता कहाँ से, उसमें हम आएंगे. I'll keep attitude as a last part of it, right? But वो आएंगे, वहां पहुंचेंगे कैसे, I'll share with you. The third ingredient for somebody to be successful is the kind of support mechanism you have around. आपका support mechanism कैसा है? Now, when I say support mechanism means nobody has made it big alone in life. ना हम लोगों ने कौन सा जिंदगी में अकेले कुछ कर लिया. हमें किसी ने चलना सिखाया, किसी ने बोलना सिखाया, किसी ने जोड़ना घटाना सिखाया, किसी ने लिखना सिखाया. So somebody or the other has been right behind us. हमारे पेरेंट्स थे, हमारे टीचर्स थे, हमारे फ्रेंड्स थे. इनको हटा लो हमारी जिंदगी से तो शायद हम वो ना रहें जो हम अभी हैं. So all of us we have kind of had a support, but still I've seen so many entrepreneurs who have got a great team, and especially the second generation entrepreneurs. I've seen that they were blessed with a great team, with a great business empire, but they still could not have more breakthroughs in life. और कुछ ने तो जो उनको मिला वो भी बर्बाद कर दी. ऐसे कितने राजा महाराजाओं की कहानी है हमारे पास जहां पर द प्रिंस वाज देयर, बोर्न इन रॉयल फैमिली. एक दिलीप सिंह नाम के एक राजा की मुझे एक स्टोरी हिस्ट्री याद आ रही है. दैट ही व्हेन ही वाज इन इंग्लैंड and he had millions of pounds with him in terms of because वो राजा के लड़के थे. and वो सारा पैसा उनका लाइफ में ऐसे खत्म हो गया. and he was left with nothing when he died. तो इतना सपोर्ट मैकेनिज्म था, इतना रिसोर्सेस था, उसके बाद भी they could not make a great life for themselves. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टीम के बिना कामयाबी मिल सकती है. टीम भी लगेगी, सपोर्ट मैकेनिज्म भी लगेगा. इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम बिग, अ ग्रेट टीम. बट एक टीम के होते हुए भी हम लोग नहीं बन पाते. तो और क्या चीज लगेगी? तो हम आते हैं चौथी चीज. नॉलेज हो गया. द वर्ल्ड्स बेस्ट नॉलेज may not give you the biggest breakthroughs.
and we have seen it happening. I'm not making a political statement, but we have got prime ministers of the countries who have been very knowledgeable. Hmm? We've got presidents of the countries all over the world who have been very knowledgeable. Degrees हजार hai, right? But that itself is not enough. Then we understood that talent itself is not big enough. Then we understood that एक support mechanism होना, एक team होना itself is also not enough. तो चौथी बात पे आते हैं. And the fourth thing is opportunities around it. कि कुछ लोगों के पास नॉलेज भी होता है, टैलेंट भी होता है, एंड सपोर्ट सिस्टम भी होता है, बट मौके नहीं होते. तो मौके होते हैं तब भी आपके पास एक ब्रेक थ्रू की पॉसिबिलिटी होती है, बट मौके ऑन देयर ओन इट्स नॉट इनफ. अपॉर्चुनिटी का खुद का होना इज नॉट इनफ. अरे मौके पकड़ने वाला इंसान भी तो चाहिए. और मौके जो है ना, कोई अपॉर्चुनिटी होती है वो सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होती है. बोलते हैं ना, अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, बी देयर. आई एम जस्ट सेइंग opportunity does not knock on one door, it knocks on many doors at once. वो एक समय में बहुत सारे दरवाजे खटखटाती है, सिर्फ आप ही का नहीं खटखटा रही है. और उसमें से जो पहले आ गया वो उसको पकड़ ले. That's the quality of an opportunity. It knocks on many doors at the same time. तो अपॉर्चुनिटी तो है, बहुत से लोग, किसके पास नहीं थी? आपके पास, मेरे पास, हम में से किसके पास मौके की कमी थी? गो बैक टू योर स्कूल डेज. क्या मौके नहीं थे पब्लिक स्पीकिंग करने के? क्या मौके नहीं थे कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के? लुक इन योर कंपनीज, क्या मौके नहीं है नेक्स्ट लेवल के काम करने के? क्या मौके नहीं है कुछ और बड़ा प्रोडक्ट निकालने के? क्या मौके नहीं है कस्टमर की और रिक्वायरमेंट को समझने के लिए? मौके तो बहुत है, बट पकड़ने वालों की कमी होगी. एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द फिफ्थ एंड द मोस्ट वाइटल एस्पेक्ट ऑफ सक्सेस. आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे दैट कहीं अगर ब्रेक थ्रू लाना है, तो ब्रेक थ्रू लाने के लिए नॉलेज लगेगा, ब्रेक थ्रू लाने के लिए टैलेंट लगेगा, ब्रेक थ्रू लाने के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म लगेगा, ब्रेक थ्रू लाने के लिए मौके लगेंगे. लेकिन इन सब के ऊपर जो राइड करता है, जो इन सब के अंदर जान डालता है, जो इन सबको पोटेंट करता है, जो इन सब के अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालता है, वो वन थिंग इज योर एनर्जी लेवल्स. आई रिपीट अगेन, आपकी एनर्जी. व्हाट इज योर एनर्जी लेवल? And if your energy level is low, in spite of the knowledge, in spite of the talent, in spite of support system, in spite of the opportunities, you will not be able to have any breakthroughs. कि कहीं ना कहीं आप ठंडे हो गए, कहीं ना कहीं आपके अंदर की एनर्जी जो है वो कहीं इतने लो लेवल पे आ गई है कि अभी कुछ और आपको करने, मौका सामने तांडव कर रहा है, लेकिन आप पकड़ नहीं रहे. सपोर्ट सिस्टम आपके साथ है, वो खड़ा हुआ है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर पा रहे. आपके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन आपकी एनर्जी इतनी लो है कि आप उसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर. आपके अंदर दुनिया भर की नॉलेज भरी पड़ी है, बट योर एनर्जी लेवल्स आर सो गॉड डैम लो. सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग टू आस्क योरसेल्फ इज, व्हाट अबाउट माय एनर्जी लेवल्स? वो बोलते ना, आपने, आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड दिस और नॉट, एनर्जी इज, दिस इज लाइफ. सो लाइफ का मतलब एनर्जी इज अलाइव, इज अलाइव. बोलते ना, जिंदा अंडों को कभी भी मरी हुई मुर्गी के नीचे नहीं रखना चाहिए. You don't put live eggs under a dead chicken. वो तो मरी हुई मुर्गी है, उसके नीचे अगर आपने जिंदा अंडे भी डाल दिए ना, तो कुछ नहीं होने वाला, वो अंडे हैच नहीं होने वाले. क्षमा करिएगा ऑल वेजिटेरियन पीपल, आई एम यूजिंग दिस एग्जांपल, बट what else do I do to make you understand that you have your dreams alive? Maybe you have your talent there, you have your knowledge there, you have your support there, you have your opportunity there. ये सब अंडे हैं, और उसके ऊपर बैठ गया एक डेड चिकन कॉल्ड यू, व्हिच इज डेड. तो ये सब कहां हैच करेंगे? यू गॉट बी अलाइव, यू गॉट बी हैपनिंग. कि आपसे कोई मिले और आपको कोई छू दे तो उसको करंट लगना चाहिए, इतना एनर्जी आपके अंदर होना चाहिए. और जब when you're happening, when you're alive, when you're full of energy, then you will see so many things will start unfolding.
And all these things will fall into place. Your knowledge, your talent, your people, support mechanism, your opportunities, they will all fall into place and they will start showing their potential. So the question you all have to ask is, so आपके मन में एक सवाल तो आना चाहिए. क्या सवाल आना चाहिए बताइए. टेल मी, क्या सवाल आना चाहिए. मैंने कहा ये 5 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, तो आपको सवाल मन में सवाल आना चाहिए. टेल मी द क्वेश्चन विच यू शुड हैव, यू मे हैव. डू हैव 5 these 5 things in me. है ठीक है. और बताओ और क्या क्वेश्चन आना चाहिए. देन आई विल टेल यू द क्वेश्चन. ah चलो. तेज पूछ रहा, हाउ डू आई इंक्रीज माई एनर्जी लेवल. How do we acquire these ingredients? How to generate and keep energy high forever? Now I have high energy. Okay, great. You all, most of you got it right. Because getting in knowledge, talent, opportunity, support system है मुश्किल है, लेकिन ये उतना मुश्किल नहीं है या उतना ज्यादा फोकस वाला एरिया नहीं होना चाहिए कंपेयर टू योर एनर्जी लेवल्स. बिकॉज एनर्जी is kind of superseding all. Energy is something which is essential to even awaken all these things which you have with you. So the question you should have in your mind is, how do I constantly keep on generating more energy? How do I constantly be on that high where I maximize on my opportunities, where I kind of maximize on the support mechanism which I have, where I kind of maximize on the knowledge, on the talent which I have been blessed with. ये टैलेंट के ऊपर मुझे ध्यान में आया. With due respect, wasn't Vinod Kambli talented? Wasn't he one of those gifted batsmen who was next to Sachin? People said even Sachin se bhi acha hai, Sachin se bhi काबिल इंसान है. With due respect to him, and look at where he is today. He could not make any breakthrough. Somewhere all the energy which he had, it disappeared. So talent होने के बावजूद भी कोई इंसान जो है उस मकाम तक नहीं पहुंचा जहां उसने पहुंचना चाहिए. And of late, I've seen a few videos of Kamli, and it's quite shattering, quite disturbing to see the kind of life he has made for himself. कि कहाँ किस टैलेंट का इंसान, किस लेवल का वर्ल्ड कप खेला हुआ इंसान, वर्ल्ड लेवल पे एक इंसान को मौका मिला. एंड whatever happened, he may blame the certain people around, but उसके बाद भी तो लोगों ने जिंदगी जी है ना. ऐसे नहीं कि उसके अलावा लोगों ने जिंदगी नहीं जी है. हुआ है, लोगों के बहुत से लोगों के साथ बुरा हुआ है, पार्शलिटी हुई है, कुछ भी जो भी हुआ है, जो भी वो क्लेम करते हैं हुआ उनके साथ, लेकिन उसके बावजूद भी तो लोगों ने जिंदगी अच्छी बनाई है ना अपनी. टैलेंट इटसेल्फ इज नॉट इनफ. So the main question is, how do I keep this energy levels on a high? I'll give you two ways. Two ways. One is an easy way and one is a difficult way. One is an easy way, comparatively easy way. I'm not saying very easy, but comparatively easy way. And one is a difficult. Hanji. One is an easy way and one is a bit difficult. But जो difficult वाला है वो sustaining है, long lasting है. जो comparatively easy है, it is quick, but it is also short lived. And it has to kind of it has to be renewed on a constant basis. So the first, there are two ways to it. I'm not saying कौन सा गलत है, कौन सा सही है, दोनों सही है. One is instant. One is it takes time, but एक बार वो चालू हो गया ना, then that
energy creation happens for a long period of time. ये ऐसा एक बार इंजन चालू हुआ तो फिर चालू रहता है लंबे समय तक. एक है कि इंस्टेंट है, पुट खत्म, दोनों है. आई फील दैट दोनों का एक कॉम्बिनेशन यूज किया, it will be more effective for us. One is called the Western way of creating energy, or the Western way of having energy in life, and one is the Bharatiya way or the Eastern way. No, not very difficult to understand, but the Western concept says that the way you can build energy is when you bring in motion. Anthony Robbins has been saying it for the last 30, 40 years. Motions bring emotions, motions bring emotions. And he is scientifically right. The more you are in motion, the more you will have energy inside. तो आप क्या कर रहे हो अपने बॉडी के थ्रू? आप इमोशंस क्रिएट कर रहे हो, बॉडी के थ्रू एनर्जी क्रिएट कर रहे हो. एंड इट मेक्स सेंस द मोर यू लुक एट इट. बट देयर इज अनदर वे. तो यहाँ पर बहुत से एक्शन करने पड़ते हैं. यू काइंड ऑफ क्लैप, यू विसल, यू सेलिब्रेट, यू आर दैट मोड, यू वॉक फास्ट, यू डोंट सिट in a dull way. तो आपके बॉडी पोस्चर, आपका पूरा ओवरऑल, यू आर इन a state of action to bring out that energy level. एक ईस्टर्न वे है where no action is required. A person who's in a static state, एक शांत ऐसा बैठा हुआ इंसान भी can be full of energy. और वो कैसे होता है? Because that person has activated his internal sources of energy. जो हमारे उसमें, if you go to have some time with me, we'll go deeper into, कभी आओगे आप माई लाइफ प्रोग्राम में मेरे साथ, so you'll understand the 7 chakras which are there and how each chakra, the energy from each chakra can be activated, and what energy is leading to what action from our side. It is those 7 areas where energy is there, and we activate energy from those 7 areas, and each area will lead to a certain action, each area will lead to a certain emotion, each area will lead to a certain aspect of our life. So there have been rishis and munis for last so many centuries who have been meditating, who have been practicing, who have understood this, who have unfolded this to the world, who have given this beauty to the world, that there is energy inside you, and if you can understand how to unlock that energy and how to lock it whenever not needed, and that energy is in your control, and then that energy you use for your talent, you use it for your knowledge, you use that energy to grab opportunities, you have so many breakthroughs. So one is where you are always on the move and always constantly in action mode. So in my Life 360 program, I focus on this. On my life program, I focus on this because both are important, both are good. One is fast, one is instant. One takes time, but this one is lifelong serving. Once you get used to this energy level, then this one is not very exciting for you. कि आप शांत बैठे हैं, लेकिन you are so full of energy. You're like a volcano. You have so much of energy inside. So, coming back to all of it, the 5 ingredients for us to have a breakthrough in life. For anything which you really want to have a breakthrough, knowledge is important, right? Talent is important, support system is important, opportunity is important. Have all these 4. And you it's like your aloo ka masala, and on top of it, the basin is your energy. Then it becomes a wonderful vada. Always ensure that you're high on energy. तो कभी हम meditation से आप energy high कर सकते हो by you activating. So go into meditation. I strongly suggest, go deeper. Every time you go deeper into meditation, you will understand another aspect of meditation. And then maybe a time will come when you will go into chakra activation meditation. And that's one part. Throughout the day, you will see that energy levels are going to be high. The other part is, can you bring some action in your life? Don't stay static for a long period of time. आप अगर बैठ के काम कर रहे हो बहुत देर तक, थोड़ा बीच में उठो, stretch your hands, move your hands in a way, walk around, come back, walk a bit fast. You will see you have created a high energy for you. Right? At least do some physical activity once or twice in a day, which is physically very, very draining for you.
So when physically you are active, physically you're on a high, you have energy levels also creating inside, happening inside you. I think both options are great options. And it's not that do I choose this one or do I choose this one. दोनों options ही जबरदस्त हैं. दोनों options को साथ लेके चलो, and I'm sure you'll have number of breakthroughs you will have in life will be phenomenal. Again, I'm saying there are enough dead people who are walking on the streets of the world. There are enough dead people who are walking on the streets of the world. Let us not be one of those dead people. Let's not be a dead person walking. Let's not be in the organization a dead person working. Let's not be at home a dead person eating, sleeping. We should be an awakened person, a person of energy, because energy makes things happen. ठंडेपन में आपके बड़े सपने नहीं आते. ठंडेपन में आप कुछ बड़ा काम पकड़ते नहीं हो. ठंडेपन में आप कुछ बड़ा करने की संभावना क्रिएट नहीं करते हो. ठंडेपन में आप किसी मौके को नहीं पकड़ते हो. ठंडेपन में आप किसी का सपोर्ट लेने लायक नहीं रहते हो. ठंडेपन में आप अपने टैलेंट को यूज नहीं कर पाते हो. ठंडेपन में अपने नॉलेज को भी आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाते हो. तो ठंडा नहीं रह रहा है. लेट्स स्टे फुल ऑफ एनर्जी. हाँ जी. Sir, please take one session on seven chakras. I feel that this is something which cannot be done in just an online session, because you got to feel it. You got to feel it. So I would love to, but I would strongly suggest that if you're a part of my life, जब ये साल में एक बार लेता हूँ, if you can be a part of that program, you will actually experience, you will actually understand. So more than theoretically understanding, intellectually understanding, if you can have an experience of that, your belief in that will be much more higher, and your willingness to do it will be at a different level. इंटेलेक्चुअली समझने से गारंटी नहीं आप कुछ करोगे, लेकिन आप एक्सपीरियंस कर लेते हो, इसका मतलब आपने कर लिया ना, फिर आप उसको बार बार करने की एक चाहत क्रिएट कर लेते. So that's what I feel. So this is what I had to share for this HM, this weekly shot. Make a great week for yourself. So आज का कैसा रहा आपको आपका HM? I'm sure you will have some and you will make some breakthroughs in your life. Will you or not? हाँ जी. Send all your friends and loved ones, जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, if you can get them on Happy Minds every Saturday morning at 7, and all of you have joined in late today. I saw quite a few of you joining in late. 7 o'clock it starts. Every time it starts at 7 o'clock in the history of my life, it has never happened. पिछले 26 सालों में कभी भी 7:01 पे हैप्पी माइंड चालू नहीं हुआ है. 7 o'clock means 7 o'clock. तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, टाइम पे आइए. Don't miss out on the meditation. Don't miss out on some sharing. And I would love to listen to some sharings from your side. Next Happy Minds, कुछ ब्रेकथ्रूज लेके आओ और कुछ मेरे साथ एंगेजमेंट रखो इन टर्म्स ऑफ कुछ सवाल जवाब बातें. ईस्टर्न वे एंड वेस्टर्न वे प्लस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट MG sir's way through HM. आई शाबाश. I love you for this. Chalo, make a great life. And the upcoming programs, two upcoming programs which I want to share with you. One is our leadership program coming up on the business side on 5th and 6th of December. If you want to if you want to have some clarity on leadership, if you really want to lead people well, you want to kind of increase productivity from amongst your team members, take the productivity high by 10 times, then I feel be a part of this 2-day workshop on leadership. It's a beautiful, one of my favorite workshops. How do you bring out the best from people? So ye hai, agar if you feel that you want to be a part of it, be there. And second is a lovely initiative. It's not a program, but हमारे यहाँ हैप्पी माइंड्स होता है, which every year we do a program called मेगा हैप्पी माइंड्स. मतलब बड़े लेवल में मेगा HM करते हैं, where it's a physical HM. तो इस बार का जो मेगा हैप्पी माइंड्स है वो एक सब्जेक्ट पे हो रहा है जिसका नाम है फैमिली हम. Means as a family we come and I'm going to share a few insights on how as a family एक परिवार जो हमारा है, it's not for your team members, it is for you and your family. में आप और आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, तो आप जो 5-6 लोग हो,
if as a family, क्या आप कुछ बातें ऐसी हैं जो आप समझ सकते हो which are essential for a great family life? क्या कुछ बातें ऐसी हैं जो हम एक परिवार के रूप में समझ लें और इसको जीना शुरू करें, जिससे एक फैमिली के रूप में हम आने वाले साल, आने वाला जीवन उसको बड़े ढंग से बिता पाएँ? Maybe next HM I'll share a bit more about this concept and this initiative. So वो एक है and it's not a program per se, but a sharing from my side and it's there on 17th of December from 10 a.m. to 12 p.m. And there's an auditorium which we have taken, we have booked, and we are looking forward to a great participation from all who are there, from as many as possible. जब तक hall नहीं भरता तब तक तो seats है ही. So if you want to be a part of it with your family, anybody can come in. Children who are above 7-8 years of age can come, as long as they are not इन अ पोजीशन टू सिट इन द हॉल. तो अगर वो बैठ सकते हैं तो उनको आप लेके आइए, बट छोटे बच्चों को अवॉइड करिए बिकॉज बच्चे अगर रोएंगे, आपको जाना पड़ेगा तो आपका भी मिस होगा, बाकी ऑडियंस का भी मिस होगा, तो उनको अवॉइड करिएगा. तो ये दो इनिशिएटिव्स हैं एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड लेट्स विश इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट. आई एम श्योर आपकी दीपावली बड़ी अच्छी गई होगी, बहुत बढ़िया धमाल किया होगा आपने दीपावली में. एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेटिंग फॉर टुमारो वर्ल्ड कप फाइनल. And I'm sure all Rohit Sharma and gang will give their best, and they will be, बोलते हैं कि going all out. They will be blazing all guns tomorrow, and I'm quite positive that we will give a tough fight to Australia and get the World Cup back to India. Hmm? So, God bless you all, Rupesh. Thank you. God bless Navnath, Kanta, Kusum.